Okay, first of all we log in to the system में login थींदासीं. Then असां वटि account ठहियल आहे. We have a account. What happened? Okay, we have a account that is Auric1. Then go through the SQL workshop. Okay, we discussed various queries that we have saved already. So one by one I will display all the queries. Okay, we left over from previous to next lecture. Okay, so first of all, what is how to view the particular record? What is view? Create a view table data that already created the view. When we want to run this show an error that this already exists. This object already view exists. Then I rename this table 1. Okay. Then again run it. It will create the view. How to view the record? We simply select the data all from view. Okay. छा कंदासीं इनके व्यू के क्रिएट थी वियो. हाणे व्यू के असां ॾिसण चाहींदासीं त असां सिर्फ़ कंदासीं select all from TMP1 table. Means this is view. How to retrieve the data from view? Okay, this show the view. View छा हूंदो आहे? View माना to save the times from running all the queries. You can first create only the view, then you can add the view into your project and directly display the data by using view. So here we have simple view of a data. Okay, clear? Okay, then another query, we have a save query, that is intersect. We perform the different type of functions or set operation functions. जीअं सेट हूंदा आहिनि तीअं ऑपरेशन हूंदा आहिनि. त सेट ऑपरेशन में कहिड़ा यूनियन इंटरसेक्शन ऐं इहे हूंदा आहिनि. त असां अगरि डेटा खे इंटरसेक्ट करियूं था त रिज़ल्ट छा थो अचे? इंटरसेक्ट छा कंदो आहे? सिर्फ़ु कॉमन डेटा खणी ईंदो आहे, बाक़ी छॾे ॾींदो आहे. इंटरसेक्ट जो कीवर्ड लिखंदासीं, सिलेक्ट लिखंदासीं डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट्स, देन सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट. हे सेम टेबल में डेटा असां कॉमन कढूं पिया. त ज़ाहिर सेम टेबल में डेटा कॉमन हूंदी, ॿ अलॻि अलॻि सेट हूंदा, त उनमें अलॻि अलॻि थी सघे थी. त छा पोइ थींदो? त उन लाइ क्यूरी ॾिसो, जेकॾहिं असां सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डीपीटी कयूं था त. ओके, तो सॉरी छा हुयो टेबल डिपार्टमेंट्स. ओके, टेबल व्यू डज नॉट एग्जिस्ट. छाकाणि त असां डिपार्टमेंट जे टेबल जो कोई बि व्यू न ठाहियो आहे, इन करे एग्जिस्ट नथो करे. ओके, सो वी मॉडिफाई दैट डिपार्टमेंट. ओके, वी फाउंड दिस. जेका डिपार्टमेंट जे टेबल स्टूडेंट जे टेबल में डिपार्टमेंट में जेका कॉमन टेबल जेको कॉलम हुयो न, उन्हनि जी डेटा रिट्राइव करे खणी आयो. ओके, जेके मैच पे थिया नंबर 1 2 3 वो मैच पे खणी आयो. फॉर एग्जांपल असां ॾिसूं कि वाकई में इहो आहिनि या न, त असां छा कंदासीं? we will go through SQL workshop, then object browser and view these two tables. ये ॿई टेबल्स असां व्यू कंदासीं. कहिड़ो? हिकिड़ो डिपार्टमेंट जो टेबल ॾिसंदासीं त डिपार्टमेंट जे टेबल में उहे डेटा आहे या न आहे. ओके, so click on the data, then you see 1 2 3 4
will be not to display kon thindo. Why? Because they wouldn't match into the student table. Okay, student table में वो data match न पे थे, न करे वो न show कंदो student table असां ॾिसंदासीं. We have a students table. Okay, here we have department 1 2 3 4 and again 1. जेके कॉमन हूंदा उहे शो ॾेखारे पियो, बाक़ी न. फॉर सपोज 1 कॉमन आहे त 1 हिकु दफ़ा ॾेखारींदो, 2 ऐं 3 वंस ॾेखारींदो. त इंटरसेक्शन जो कमु इहो ई हूंदो आहे. ठीकु आहे न, जेके कॉमन हुजे रिकॉर्ड उहो खणी अचे. ओके, क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Then we have SQL workshop. Go through SQL commands. See the saved query. Okay, then union. How to perform union? Union is simply operator that we write only union keyword, then union statement, then select ename comma department number from employee, and select department dname name and department number from department, order by department number. Okay, so we can directly run this query and see what happened. See here that it select the department number from employee table and union them. बिन्नी के मिलाए करे total record ॾेखारींदो. ठीक है ना? बिन्नी जा union करे e-name and department name. ॾिसो accounting छा आहे? department आहे. Okay, clerk छा आहे? name आहे. त हिकु clerk खई, accounting खई, then king account. Okay, then there is a search department, then Scott and Smith. ये alphabetically order में कहीं हैं, इन करे accounting and research वाला department देखा तो पर बिन्हीं के table के unite करे देखा रहे हो. Only they display the united record. Clear? If you have any query, you can ask. Okay, then जी मैम व्यू में मुझे कुछ टाइम हुयो जेको व्यू हूंदो वो असांजी वर्चुअली टेबल हूंदी आहे. जेका असीं ओरिजिनल wait. Okay, then after view we can run another queries, that is update operation. Okay, for suppose it union जो update query, simply you can update the department set location OPF. For suppose OPF colony, I want to update this OPF colony. Okay, where name BBL, then suppose set the location. For suppose the department name is BBA, those who has department DBA then only update its location. Column bio पे update करे. जॾहिं त where class में change जैन जो BBA department आहे उनमें जो location column आहे उनमें record update करे. Okay, okay, we run this. Inserted row 1 row updated. Okay, then we go through this SQL workshop, go through object browser and see the record of which table? Power. Which record we have been updated? केड़ो रिकॉर्ड है सामने केड़े टेबल में? मैम डिपार्टमेंट में. डिपार्टमेंट में. Okay, we see here OPF colony. There and जो BBA department आहे उनजी particular column में है record update थियो. Okay, for suppose we run another query, then only those who has English department then update location with new record. Okay, so we go through SQL workshop, SQL command, then we see the saved query of updated.
Okay, here we rename as English. Okay, then we set location as another name. Sachal colony. Ji Sachal colony. Sachal. Okay. Okay, we will run one row updated. Okay, we go through again this object browser and see the department record. Okay, then see Sachal has been updated into the table. अगर टेबल पहिरीं खां क्रिएट आहे त असां अपडेट कंदासीं उन पर्टिकुलर रो खे अगर असांखे इनमें डेटा इंसर्ट कराइणी आहे नयो रिकॉर्ड देन व्हाट कैन वी डू ओके इन ई टेबल में असांखे अगर फर्दर असांखे हिकिड़ी एड कराइणी आहे त असां छा कंदासीं मैम स्क्रीन शेयर बंद थी है हाँ हाँ एक मिनट